everyone and welcome to thorough newspaper analysis. Let's see what articles we will be discussing today. Firstly, we have the article called as the main bricks to use in India's steel frame. Now, as all of us know that very recently the results for UPSC Civil Services Exam 2019 they have been declared. So उस slide में क्या ज़रूरतें हैं हमारे IAS या फिर कोई भी हमारी जो civil services हैं उसको और ज़्यादा strong बनाने के लिए वो discuss हुए. This is an editorial from the Hindu. Second, the WHO's relevance is fading. This another piece is from the Hindu. और ये बात करता है कि किस तरीके से आज के सिनेरियो में जो रेलेवेंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो फेड हो रहा है या फिर जो एक्चुअली जिस चीज के लिए ये आया था एग्जिस्टेंस में वो एक्चुअली वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है. Now the reasons behind both of these articles we will be discussing in detail today. And on third we have News in Flash, which is LawSikho's own initiative, wherein we'll be discussing the pointer news points which are important for a prelims exam specifically. Now, before we get deep into today's discussion, let's have a look at the various courses that we have at LawSikho. And the best of these is the lot of the courses, which is the Judiciary Test Prep course, wherein the aspirants will be prepared in the best manner for taking up the Judicial Services exam. You can go and visit the landing page, the link to which is there in the description box, and you can download for yourself this free study material, which has been specifically drafted for the aspirants itself. We have various other courses, they can anytime be viewed on the official website of LawSikho. अब देख लेते हैं कि आज का MCQ क्या है. हम रोज अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक MCQ डिस्कस करते हैं जिसका आंसर हमारे पूरे जो कंटेंट हम डिस्कस करते हैं उसमें ही कहीं ना कहीं छुपा होता है. So you all the viewers who are doing this analysis along with us right now, do write the answer to this question if you know it in advance, and even if you're able to do it later on, do write it in the comment section. So the question is, who has been appointed as the latest Comptroller Auditor General of India? Now, as we know, we have this very important constitutional post of CAG, जो सारे हमारी audit करते हैं, जो भी finances होते हैं, उनको सबको balance up करने का काम इनका होता है. So the options are: first, Girish Chandra Murmu; second, Mukul Rohatgi; third, Tushar Mehta; or fourth, none of the above. Then again, we have a descriptive question as well. For global institutions like the World Health Organization, it must be made sure that they work impartially and equally for their principal cause. Discuss in the light of recent questions raised upon the diminishing role of World Health Organization. So the answer to this has to be written within a word limit of 250 to 300 words maximum. So you may jot it down in the comment section below. With this, let's quickly start our discussion with the civil services. And as we know that अभी हमने बात करी है कि अभी UPSC, CSC, जो UPSC is the Union Public Service Commission. So basically ये बहुत important हमारे कई सारे exams होते हैं जो Government of India के exams होते हैं वो conduct कराता है और उसके और भी बहुत सारे जो हैं roles हैं जो UPSC के हैं. So basically UPSC का एक बहुत ही important exam जिसको हम IAS का exam कहते हैं, though there are various other services also that are under this exam. So जो CSC है, which is a Civil Services exam, वो हर साल कंडक्ट होता है. एंड अभी रिसेंटली 2019 का रिजल्ट आफ्टर अ लॉन्ग डिले बिकॉज ऑफ कोविड-19 बहुत सारे इंटरव्यूज ऑब्वियसली वो स्टॉल अप हो गए थे एंड दे कुड नॉट बी कंडक्टेड विद इन टाइम, बट अभी उसका रिजल्ट जो है वो रिलीज हुआ है. लेकिन उसके साथ ही अब दो क्वेश्चंस रेज हुए ना. These questions are not particularly on the results actually, but the entire setup of civil services जो हमारा पूरा सेटअप है पूरे इंडिया में उसको लेके. The first question is, are the right type of candidates being inducted into higher bureaucracy? Because we know that India में बहुत सारा बहुत बड़ा important role वो bureaucrats play करते हैं. Now be it the IAS, IPS, जिस भी तरीके के हमारे जो हैं जो इस तरीके के हमारे officers हैं, because बहुत सारी policy framing and then policy को execute कराने में भी इनका बहुत important role होता है. So it is very desirable and important that these bureaucrats are free from any kind of discrepancy और ये बहुत honestly और पूरी जैसे dedication के साथ काम करें. That is why it is important to think whether we are inducting the right type of candidates into this job profile. Secondly, is there a mid-career review of their performance to weed out the misfit and dishonest? Yes. अभी ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ जो हमारा UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो पूरा प्रोसीजर है वो ही इतना ज्यादा आर्डेंट है, इतना टफ है कि ऑब्वियसली जो बहुत अच्छे और डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वो ही इसको क्लियर करके इस पोस्ट पे पहुंच पाते हैं. राइट एनफ. बट
यहाँ पे ऑथर कहते हैं क्या हमारे पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल है जहाँ पे जब उनकी एक तरीके से वो अब अपनी जॉब पे हैं, देर ऑलरेडी वर्किंग नाउ एज अ सिविल सर्वेंट इन एनी कैपेसिटी, क्या हम उनके मिड करियर में जो उनका परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करते भी हैं या नहीं, या फिर एक तरीके से वो हम उनके लिए एक सेफ हेवन खोल देते हैं कि वंस दे आर इनटू द सर्विसेज नोबडी इज देयर टू लुक इनटू देयर फंक्शनिंग एंड देयर परफॉर्मेंस. सो इज इट सो और इट इजंट. सो लेट्स सी what are the constitutional provisions relating to civil servants. Now यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए, तो this is an extension to today's article, उसमें इस तरह के कुछ sections की ऐसे बात नहीं की गई थी, but being aspirants of any kind of exam, it is very important कि हमें ये provisions particularly पता होना चाहिए. So Article 309 of the Constitution deals with the recruitment and conditions of service of persons serving in union or state. Now we would not get very deep into this because then they can be anytime read by you all. So आप इसको screenshot ले सकते हैं, save कर सकते हैं, then you can go through these, or also you can go through these through your Bare Act. Then we have Article 310, which deals with tenure of office of persons serving the union or a state. Then Article 311 talks about dismissal, removal or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the union or a state. Basically, the topic that we need to discuss here under the civil services is कि कितना important role जो civil servants हैं वो play करते हैं, and secondly कितना important ये हमारे लिए है कि हम इस पूरी जो group है, इस पूरी team को corruption free रखें और उनकी हम जो efficiency है उसको regulate भी करते रहें और improve भी करते रहें. Then we have Article 312, which talks about the All India services. So basically, let's understand that what are the issues associated with IAS and IPS. Now it is said कि जो IAS है, IPS है, ये already बहुत ज़्यादा churn होके, बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं कि बहुत मेहनत करके बहुत limited लोग ही इन posts तक पहुँच पाते हैं. But still, बहुत सारे ऐसे issues हैं, दो नंबर में वो वैसे इतने ज़्यादा नहीं हैं, but जो उनकी gravity है, जो उनकी seriousness है, वो बहुत ज़्यादा है. First, inaccessibility. Now ऐसा कहा जाता है, और it is also the right thing to be said, that IAS, IPS ये जो कैडर है ये उन ऑफिसर्स की रैंक है जो एक्चुअल में पब्लिक के साथ डील करते हैं. So these are the people who are directly to say answerable also to the public, and secondly they must be the most approachable institution of the government, क्योंकि जब ये civil servants हैं तो आप नाम से ही we can directly construe that they are meant to provide services to the civil society, that is the citizens of our country. So basically अगर वो भी inaccessible हैं, as in अगर आप सोचे कि कोई लोग हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के और उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, now be it anything, be it shortage of water, electricity, या फिर अगर ईव टीजिंग की प्रॉब्लम है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट इवन एबल टू मीट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड टेल हिम अबाउट देयर plight. What is the point of having a civil servant in place, right? So इसीलिए it is important कि जो inaccessibility की प्रॉब्लम है कि लोग अपने जो उनका एक तरीके से ऑफिस बेयरर है उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, so that actually serves no purpose of having a civil servant in the first place. Second, image of being biased towards the rich. अब जो ये second point है वो all together इस first point से ही जुड़ा हुआ है कि लोगों का ये कहना है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, या फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात कर लें, या फिर हम आईपीएस ऑफिसर की बात करें, किसी भी सर्विस मैन की इस जो कैडर में है उसकी बात करें, तो वो इनएक्सेसिबल है गरीबों के लिए और एक्सेसिबल है किसके लिए, जो रिच है उनके लिए. Now, this is a harsh reality in today's society, and specifically अगर हम इंडिया की भी बात करें तो that things appear to be easier for the people who are rich, and this actually इसको हम बिल्कुल shed off भी नहीं कर सकते कि this is just not the truth. ये actual में सच है भी, लेकिन इसी रियलिटी को हमें बदलना है और इसको हमें एक अच्छी स्टेट में लेके जाना चाहिए. सो अभी आइडियली अभी जनरली होता क्या है कि जो अमीर लोग हैं या फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, पहली बात तो उन्हें प्रॉब्लम्स ही कंपैरेटिवली कम फेस करनी पड़ती हैं बाकी पुअर पीपल के कंपैरिजन में. सेकेंडली, अगर उनको कोई इशू होता भी है, सो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू अप्रोच दिस. अब वो इसलिए भी हो सकता है कि ड्यू टू देयर हाई एंड कॉन्टैक्ट्स दे हैव, सो वो अक्सर तो वो और भी ज्यादा जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं या फिर बड़ी पोस्ट में मिनिस्टर्स या कोई होते हैं वो उनसे ही अपना काम पूरा करवा लेते हैं. बट इफ इन केस they have to reach out to these civil servants, it is very easy for them, which actually should be the case opposite, as in not that कि rich people के लिए मुश्किल होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं या फिर जो ज्यादा जिनकी ऑप्रेस्ड क्लास है उनके लिए ज्यादा इजी होना चाहिए अपने एक ऑफिस बेयरर को या अपने सिविल सर्वेंट को तक पहुंचना.
So third, and also it says that there are only a very few of the officers who are actually working in order to alleviate the misery. So वो कहते हैं कि जो author है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि civil servants काम कर ही नहीं रहे हैं poor लोगों के लिए या फिर गरीबों के लिए या फिर और जो इस तरीके के लोग जिनको ज्यादा attention की जरूरत है, they are, and basically that is only how कि सारा system अभी भी intact है and it is working still efficiently. But then again, we should make sure that all the civil servants are working in the same direction. Second, insensitivity and demands for illegal gratification. So this illegal gratification, आप इसको कितना भी beautify करके लिख लो, this simply means corruption, which actually is another harsh reality जो ना सिर्फ civil servants तक limited है, बाकी बहुत सारे government institutions तक, government offices में भी ये बहुत ज़्यादा prevalent है. So obviously अगर कोई पहुंच भी जाता है किसी civil servant के पास, तो अक्सर ऐसे cases देखने को मिलते हैं that they ask for any kind of bribes or any other means of corruption. Definitely this should not be taken up as that all of them are like this. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. हर institution as an institution corrupt नहीं होता है. There are a few flag bearers of those institutions जो corruption में या फिर कुछ इस तरह की activities में involve होते हैं and actually में demean सारा institution हो जाता है, which definitely is not right. But yes, it exists. This also should be known. So इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए कि इसका way forward क्या है, that there is a need to encourage candidates with compassion and honesty to join the services. Exactly. So only when they are sure that the candidates that we are bringing in or we are inducting into this service, they have compassion, they have empathy, sympathy and honesty of work, उन्हीं लोगों को हमें इसमें इंडक्ट करना चाहिए. लाइक ऑब्वियसली जो नॉलेज बेस है वो तो जरूरी है ही टू क्लियर द एग्जाम्स, बट आजकल क्या है कि पर्सनालिटी टेस्ट विच इज द थर्ड स्टेज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को दी जाती है दैट द कैंडिडेट इज ऑनेस्ट एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड लॉ. So this was all for this article. Let's see that what do we have for the second article. It talks about the diminishing relevance of WHO, which is the World Health Organization. So basically, let's see that why this actual topic has been in news, and we have also discussed this in our previous sessions before. I guess April की ये बात थी जब yes, it was almost in April when we discussed this topic. So basically उस time पे क्या हुआ था कि United States ने, because वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है कोविड-19 की वजह से, एंड दूसरी बात क्या थी कि उसकी जो टर्म्स हैं चाइना के साथ अच्छे नहीं है, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग चाइना फॉर दिस आउटब्रेक ऑफ कोविड-19. सो उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था दैट वी विल बी विथड्रॉइंग आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड the biggest concern here was कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विड्रॉ कर गया फाइनली WHO से, सो जो फंडिंग है विच इज लाइक जो लार्जेस्ट फंडर WHO का है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है. सो लाइक इन 2019 इट फंडेड अप्रोक्सीमेटली $400 million to WHO, which is the largest to say share in the funds. So definitely हम समझ सकते हैं कि अगर ये एक्शन अगर कंक्रीट हो गया तो WHO की फंक्शनिंग भी क्रिपल हो जाएगी. नाउ आज का जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है कि किस तरीके से जो इफेक्टिवनेस है WHO की वो काफी ज्यादा क्वेश्चन में आ गई है. नाउ आफ्टर द पैंडेमिक ट्रांसेंडेड जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज, द इफेक्टिवनेस ऑफ WHO हैज बीन क्वेश्चनड. नाउ एक ब्रीफ आइडिया कि WHO है क्या, बिकॉज दिस इज वेरी रिपीटेड क्वेश्चन इन आवर एग्जाम इन द प्रीलिम्स स्टेज आल्सो. So questions like what is the WHO or where are the headquarters of WHO या फिर किस ईयर में ये फॉर्म हुआ था, these are very potential questions that बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में आते हैं मोस्टली इन द प्रीलिम स्टेज. तो वो उसके लिए हमारी ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है that WHO is a specialized agency of the United Nations. So keep in mind that it is not a principal organ. Yes, it is not a principal organ of United Nations, but it is a specialized agency of the United Nations that is responsible for international public health. So definitely, as the name itself says, it is the World Health Organization. So basically it has 194 member states, so all of them are the members of the United Nations except for this. Now this also can be a very important prelims question, that except for this state of Liechtenstein. So this might have various pronunciations, so simply we can call it as Liechtenstein. So iske alawa it is plus the Cook Islands and Niue. So these are not the members of WHO. This also can be a potential question, and it was formed in 1948 and has its headquarters at Geneva, Switzerland. So these should be very important things that should be kept in mind. Now
अब हमें जानना है कि इसकी जो इनफेक्टिवनेस है उसके रीजंस एक्चुअली हैं क्या, मतलब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो WHO की रेलेवेंस है वो फेड होती जा रही है। बिकॉज जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई हेल्थ रिलेटेड डिस्कशन करते हैं या फिर हमें किसी भी चीज का हेल्थ का स्टेटस जानना है, किसी भी कंट्री का, किसी एरिया का या किसी डिजीज के बारे में भी फॉर दैट मैटर, सबसे रिलायबल सोर्स प्रोबेबली जो होती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही रही है अब तक। बट स्टिल इतना बड़ा एक ब्लॉट, एक ब्लेमिश उसकी एग्जिस्टेंस पे क्यों आ रहा है दैट वी आर इवन क्वेश्चनिंग द वेरी रोल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ WHO. Let's see that what are the reasons for its ineffectiveness. First, slow response. So not only has it been like highlighted by USA, because obviously USA has some other reasons and intentions also attached to it, but अगर हम generally भी देखें तो कोविड-19 के टाइम में थोड़ा जो रिस्पॉन्स है WHO का या फिर उसकी जो प्रेजेंस है वो थोड़ी कंपैरेटिवली कम रही है एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस एक्शंस. So in this slow response, WHO has 6 geographical regions and 150 country offices, and still it delayed to report the earliest case in China by 2 months. Now इसमें दोनों का ही रोल कह सकते हैं, because China ने भी, and believe me, this situation is still better than the 2003 जो हमारा SARS जो था, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का जब इशू राइज हुआ था, ये जब बहुत बड़ा डिजीज, ये भी एक तरीके से कोरोना वायरस की तरह ही थी. उस टाइम तो चाइना ने कई महीनों तक ये इन्फॉर्मेशन छुपाए रखी थी पूरी दुनिया से दैट सम काइंड ऑफ वायरस इज स्प्रेडिंग इनटू इट्स ओन कंट्री, जिसकी वजह से उसको कंट्रोल करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था. बट स्टिल इस बार चाइना वॉज मोर ऑफ रिस्पॉन्सिव एंड एटलीस्ट 2 महीने की डिले के बाद ही बट उन्होंने ये बात रिवील कर दी थी एंड देन इट वॉज मेड पब्लिक टू द एंटायर वर्ल्ड. बट द क्वेश्चन इज, this 2 months delay has caused the world so much. अगर ये हमें और पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती, so definitely the nations would have been in a better situation to handle and tackle up this situation. But this really did not happen. So इसीलिए WHO को ब्लेम किया जा रहा है कि वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा एंड उसके जो इनएक्शन था या इनएक्टिविटी थी that has caused much to the whole world. And it has downplayed the severity of the virus, and definitely it has praised China for its response to the virus, which definitely is a big question. Then it is criticized for its poor handling of Ebola outbreak in 2014. And secondly, like I just gave an example of the SARS in 2003, उसी की जैसे जब Ebola virus outbreak हुआ था 2014 में, then also it was like criticized for handling it very poorly. Then next, WHO Foundation is a separate, now we know about this, you can just take a screenshot of this, we need not cover it again and again. The second point here is dependent on rich states. Now, सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं हम, apart from जो उसकी ineffectiveness है as regard to the, like to say its functioning or its capacity to handle the world issues related to health, दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है इससे अटैच्ड WHO से कि वो इम्पार्शियल नहीं है. मतलब हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हर ह्यूमन का इक्वल राइट होना चाहिए. लाइक इन इंडिया ऑल्सो वी हैव राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू लाइफ फॉर दैट मैटर अंडर आर्टिकल 21. तो और भी हमारे बहुत सारे जो है राइट्स हैं जो हमारे ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन राइट फॉर देयर हेल्थ. ऐसे में एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन या एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक WHO, अगर वो भी इम्पार्शियली फंक्शन नहीं करेगा और वो भी फेवर करेगा उन स्टेट्स को जहां से उनकी या तो फंडिंग ज्यादा आती है या उसकी कुछ पर्सनल रीजंस है, सो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग टू सी दिस. अभी क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी फंडिंग होती किस तरीके से. इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. बेसिकली WHO की जो फंडिंग है वो 2 तरीके से आती है. वन is the assessed contribution and second is the voluntary contribution. Now, assessed contributions are the mandatory contributions that the members of WHO have to make. अब ऐसा नहीं होता है कि हर कंट्री बराबर ही असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है, बिकॉज ऑब्वियसली द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एवरी कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. तो होता क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जस्ट लाइक हमारी जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, उसी तरीके से हमारी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग होती है. तो हर 2 साल में ये रिवाइज किया जाता है कि हर कंट्री अपने GDP का कितना शेयर as an assessed contribution देगी WHO को. Because obviously, see, if India is a member of WHO or if any other country, China is a member of WHO or US is a member of WHO, तो आपको उसके मेंबर होने के बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं. जैसे कि कोई भी अगर नई वैक्सीन है या कोई भी अगर नई रिसर्च है इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ, उसके बारे में आपको जल्दी पता भी चलेगा और जल्दी एक्सेस भी मिलेगा.
दूसरा, कोई भी आउटब्रेक है उसको हैंडल करने के लिए आपको वहां से सजेशंस मिल सकते हैं, वहां से की स्टेप्स मिल सकते हैं। तीसरा, कोई भी इस तरह का हेल्थ अगर इशू अराइज होने वाला है या हो रहा है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी। सो बेसिकली इट्स लाइक मोर ऑफ अ टीम वर्क जिसका बेनिफिट आपको मिलता है, जिसकी वजह से ही, क्योंकि अब ये कम देखने को मिल रहा है तो मेंबर स्टेट्स को ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो रही है। सो ये जो असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसका भी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर यूएसए है। और जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है ये होते हैं कि अगर कोई भी मेंबर स्टेट्स अलग से या फिर कोई और प्राइवेट एंटिटीज, कोई बिजनेसेस, कोई भी इसमें कोई भी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ WHO. Now, the irony here is that the assessed contributions contribute only to 17% of the total contribution, and the rest, about 80% of the contribution, is done through voluntary contributions. अब इसमें एक क्लॉज और भी है कि जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई इंडिविजुअल की किसी की कंपनी है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू WHO, तो जब वो डोनेट करते हैं इस अमाउंट को एज अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, दिस डोनर यानी कि जो डोनेट कर रहा है ये एंटिटी, ही हैज द पावर टू मेक श्योर कि जो भी पैसा उसने दिया है एज अ डोनेशन वो उसकी इच्छा से खर्च हो, यानी जहां पे वो चाहता है, जिस एरिया में वो चाहता है, वहां पे WHO ज्यादा प्रायोरिटी के साथ उस पैसे को खर्च करे। नाउ दिस इज सिंपली नॉट अ डोनेशन। अब इसको अगर हम सही में कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें, सो दिस इज नॉट रियली मेंट टू बी डोनेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप डोनेट कर रहे हो किसी एनजीओ में या फिर किसी भी कहीं पे भी आप कुछ पैसे डोनेट कर रहे हो और आप उनको बता भी रहे हो कि आप इस पैसे से ये करो, सो इट्स बेटर यू डू इट बाय योरसेल्फ, राइट? अगर आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को जिसके ऑलरेडी इतने गोल्स सेट हैं, आप उनको पैसे भी दे रहे हो एंड देन यू आर ओनली प्रायोरिटाइजिंग द एरियाज फॉर इट्स फंक्शनिंग, तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल नहीं हो पाएगी। एंड कीपिंग इन माइंड कि जब 80% कॉन्ट्रीब्यूशन वॉलंटरी है, तो ऑब्वियसली 80% जो प्रायोरिटी के टॉपिक्स हैं, प्रायोरिटी के एरियाज हैं, वो भी वही होंगे जो इन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटर्स ने डिटरमाइन कर रहे हैं, ना कि सारे मेंबर स्टेट्स ने मिलकर WHO में डिटरमाइन करे हैं। This is the biggest issue. Then the financial constraints affects autonomy in decision making by favoring a donor driven agenda. Now, as we just discussed. Now here, as we can see, that United States of America, as per 2018-19, has been the largest. So we can see this is the assessed contribution and this is the voluntary contribution, and of which approximately $400 million were given by USA as voluntary, and almost $400 million as the assessed contribution as well. After that we have UK, and then the third one, this one is the private one, Bill and Melinda Gates Foundation. So this is of Bill Gates. So ये भी इसमें काफी हद तक contribute करते हैं, but we can see कि USA का importance यहाँ पे कितना ज्यादा है और किस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि WHO independently काम कर पाएगा. So this was all for today. Let's see that what we have for news and flash. Hong Kong media tycoon arrested under security law. Now, as we know that very recently China formulated a new national security law for curbing down and controlling the internet in Hong Kong. अभी उसी सिक्योरिटी लॉ के अंडर जो वहाँ के एक मीडिया टाइकून है, जिमी लाई, he has become the first highest profile person to be arrested under this new NSL, which is the National Security Law, and he has been detained over suspected collusion with foreign forces. So there we have already discussed in our previous sessions कि कई कुछ 3-4 जो है एरियाज हैं या 3-4 जिसको कह सकते हैं हम प्रोविजंस हैं जो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है नेशनल सिक्योरिटी लॉ में, और इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के अंडर अगर आपको मतलब एज एन अरेस्ट किया जाता है या फिर आप उनके लिए लायबल हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है. Second, Chennai to Port Blair submarine optical fiber internet link. Now, as we just discussed yesterday, that it has been decided by the government of India that the islands of Andaman and Nicobar they have been chosen to be built as the maritime hub, or to say the maritime सेंटर ऑफ इंडिया, मैरिटाइम एंड सिक्योरिटी सेंटर ऑफ इंडिया. सो उसी के लिए उससे बेटर कनेक्टिविटी बनाने के लिए अब एक सबमरीन व्हिच इज अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट लिंक हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय PM Modi, and it connects 7 islands in the Andaman group apart from the capital Port Blair with high speed internet. So this definitely is a very, very good step taken in the information exchange as well, and bringing Andaman closer to the mainland India. The project is funded by Universal Service Obligation Fund. Now this also can be a prelims question. पहला तो कि कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करेगी ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर. So Chennai to Port Blair, and Port Blair is definitely the capital of Andaman and Nicobar Islands. And secondly, who has funded this project? So it has been funded by Universal Service Obligation Fund at the cost of rupees 1,224 crores. Third, Sun's global magnetic field, an international
an international team of solar physicists has measured the global magnetic field of the outermost layer of the sun's atmosphere, which is called as the solar corona, for the first time. So basically जो ये magnetic fields का जो पूरा एक तरीके से स्टडी है वो कंडक्ट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ द सोलर कोरोना. अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो होता है सोलर कोरोना और एक होता है फोटोस्फेयर. दिस आल्सो कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो कोरोना जो है या फिर सोलर कोरोना है वो सन की जो एटमॉस्फेयर है, लाइक अर्थ आल्सो हैज इट्स ओन एटमॉस्फेयर, सो उसी तरीके से सन का भी अपना एक एटमॉस्फेयर है. सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कोरोना. और जो सन का खुद का सरफेस है, जैसे अर्थ का सरफेस लिथोस्फेयर है, वैसे सन का जो सरफेस है उसको कहते हैं फोटोस्फेयर. सो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. सो इट कैन बी अ वेरी पोटेंशियल क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू मीन बाय सोलर कोरोना और व्हाट डू यू मीन बाय फोटोस्फेयर एक्सेट्रा. सो जो अभी हमारा कोरोना है यानी कि सन का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर की लेयर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अभी पहली बार मेजर की गई है. नाउ फोर्थ, new CAG of India, which is the Comptroller Auditor General of India, Girish Chandra Murmu, who is a 1985 batch IAS officer of Gujarat cadre, has been recently appointed to the post of new CAG of India. Now finally, the first silk training cum production center in Arunachal Pradesh. So the center will be opened by Khadi and Village Industries Commission. This also should be remembered. And since it is the first silk training cum production center in Arunachal Pradesh in the Chulyu village in the first week of September to train and employ local people in the village. Now, अभी यहाँ पे ये topic आया ही है तो if any one of you knows कि जो सिल्क प्रोडक्शन का जो मेथड होता है इसको क्या कहते हैं, जैसे कि जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसी तरीके से सिल्क प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं. इफ यू नो दिस, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन. With this, we are done with today's news analysis. We hope that it was a good one and informative one for you. Stay tuned with LawSikho for such more sessions. Thank you so much.